So guys, let's start. Kumail already knows few things, so we can it's okay to continue without him. He'll join later maybe. So we have completed the backup. I hope you guys went through the videos and tried backing up, restoring the machine and everything. So we'll start the site recovery. Why did I merge these two topics? Because there is one common thing, whether it is backup or disaster recovery. There is one common thing, which is, could anyone of confirm what is that? Sorry, didn't get a question. Wasn't for you, Kumil. Juhi, Srishti, Amit, which is the one common service or component we use? Yes, recovery service vault. So before we set up a backup or we set up disaster recovery. By the way, disaster recovery, it's also known as site recovery. So if anyone is asking you site recovery, do not get confused. Site recovery is disaster recovery. It is also known as DRaaS. So that's the way they write it. It's capital D like this. DRaaS, which means disaster recovery as a service. Like we have PaaS, platform as a service, we have SaaS, software as a service. So they have named it DRaaS. So they don't use it very frequently, but if someone is asking you in the interview, make sure you don't get blank. Kya hai pata hi nahi, that should not happen. Site recovery, disaster recovery, DRaaS, these are the same thing. Okay. So let me go to the vault here. Before I do that, if I'm backing up a machine, a virtual machine, an Azure machine, if I'm backing up a machine which is in East US, where should I have my site recovery? This one, the vault, recovery service vault, the backup vault. Or let me open the Paint and I'll explain the question, make it more easier for you. Just give me a minute. I'll give you an easy question. Okay, this is East US. By the way, we can use one vault for multiple backup machines and everything. Okay, in one vault we can have backup and we can have replication also. Yes, replication is also one of the words. Disaster recovery, site recovery, DRaaS, replication. So this is West US. Okay, this is my VM1. This is VM2. Okay, now can I have these two virtual machines? I want to backup, also disaster recovery. I mean, doesn't make sense. No one does that. Still, I'm just making a scenario. I want to back up these two virtual machines, and I also want to do the replication of these two virtual machines. Where should I have my service recovery vault or recovery service vault? Is it possible to do that in one vault? If yes, where should I install that service or deploy the recovery vault service? Yes, guys. Vault should be on the same location where the machine is. So I should have a vault here. Right, so this is my RSV. Recovery service. So can I back up both virtual machines here, or will I require another vault for this one? We can back up both the machines. We can. So this is backup. What about replication now? Can I use same? Replication, Do I have to different use location. Different location.
different location. And use DR word here, disaster recovery. Can I have both machines in one vault, or do I require another one for this? Yes. DR for 2 machines. In different region, bought the point, but will I require 2 vault, or one should be enough for multiple machines? What do you think? So one is enough. Like for backup, you can use 1 vault. For here also, you can use 1. Is it clear, guys? Yes. Okay, just Yeah. not to confuse you guys, let me share one more thing, how it works. This was just to explain the question, but this is not the way it works. Backup ठीक है, यहाँ से सीधा आपके vault में जा रहा है backup, but replication ऐसे नहीं काम करता. Replication में आपके machines और vault के बीच में जो है एक temporary storage account होता है, cache account, which needs to be in the same region where virtual machines are. Okay, we'll talk about that first. Okay, so I hope this is clear and you know the difference between backup and disaster recovery as of now, right? Backup में क्या होता है, एक isolated backup बनता है. Replication में क्या हो रहा है, continuous आपका machine जो है वो replicate होता जा रहा है. Backup में आपके इसमें कोई virus वगैरह अगर आ गया है recently, तो you can use yesterday's backup which is an isolated copy and you can have your machine virus free. थोड़ा data loss होगा, that is fine. On the other way, on the other hand, replication में भी ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही point नहीं मिलता है, recovery points भी मिलते हैं आपको. एक दो points मिलते हैं that from where you want to bring up your machines. Okay, one thing guys, when I say a backup machine and replication machine, what do you understand? What exactly is being replicated or backed up? Anything is in any manner. This is my virtual machine. Okay, this is my virtual machine. This is my hard disk. This is my hard disk 1. I have my C drive in that. I have my second 2 hard disks is enough. Here is my RAM, CD drive. Nowadays we don't see USB ports. All other ports, okay, all are covered here. Let's say this is C drive where my operating system is residing. This is D drive, E drive, then F drive. On this disk I have 3 drives. So when I say a backup, what do you understand कि इसमें से क्या-क्या चीजें backup हो रही है? What is optional? What is must? Backup or replication, anything you say. Let's say this has इसमें जो है आपका Windows 2019 OS है. ठीक है, VM size आपका 4 GB RAM या जो भी VM size होगा standard है suppose. Ignore the spelling mistake if there are any. Yes guys, so what exactly is being backed up here? I think all the Drives. left options. Yeah, Left right. options. Right, and is it compulsory to have all of them? Only Which is the OS is compulsory? compulsory. Yes. So when I say a virtual machine is being backed up or a virtual machine is being copied or replicated, this is optional. This is the virtual machine. ये disk जो है बस वही virtual machine है, उसके अलावा इसका कोई value नहीं है. ये RAM, ये CD ड्राइव पोर्ट्स, इनका कोई वैल्यू नहीं. इमीडिएटली आपको दूसरे इसमें सेम चीजें मिल जाएगी. आपका डेटा, आपका कॉन्फ़िगरेशन, ये सब भी किसमें स्टोर है, किसका रैम कितना है, ये इन्फॉर्मेशन कहाँ पर स्टोर होती है, इसका CD ड्राइव कितना है, इसके पोर्ट्स कौन कौन से ओपन है, इसमें OS कौन सा है,
इसका साइज कौन सा है, ऑल दीज इंफॉर्मेशन, ये सब का ब्लूप्रिंट जो है ना ये सी ड्राइव में है. सो इफ यू हैव दिस ड्राइव, you have everything other than data. ठीक है, I'm not talking about the data drive. Data drive optional होता है, आपने कर लिया तो इसके अंदर का ये है, नहीं किया आपने तो that is fine. और अगर आपने सिर्फ इसको बैकअप किया है और आपके ये मशीन बंद हो जाता है, will you be able to bring this machine up? You have backed up this one, only data drive, and you're not backing up this, which is No, possible. we cannot. Which is possible, but once this is down, will you be able to bring this machine up? No, you cannot, right? You will have to create a new machine and then you can attach this disk. That is possible. But what is the difference between bringing this machine up and bringing new machine and then attaching this disk? इस C drive में क्या-क्या चला जाएगा आपका? Let me open my C drive, my physical machine's C drive, so you will understand. उसका कॉन्फ़िगरेशन चला जाएगा भाई सी ड्राइव से. Exactly. And what do you mean by configuration? Configuration मतलब बहुत सारी चीजें होती है इसमें. अपने OS का जो user ID and password वो है, जितने आपने applications install कर रखे हैं. Now, if you look at my applications, I have this Hyper-V, I have Teams, I have dual desktop, I have Outlook, I have Ubuntu. ये Ubuntu जो है एक ये है, इस पे app है. Ubuntu है. I have Kali Linux, it is an app. I have Visual Studio, ये एक app है. PowerShell को मैंने अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर कर रखा है. देयर इज पुट्टी और पट्टी, हाउएवर यू रीड इट. क्रोम और ये सब जितना मैंने इस पे ये कर रखा है, देयर इज अ सॉफ्टवेयर क्लाउडफिश, वॉइस चेंजर, ये जितने सॉफ्टवेयर है यहाँ पर सब कुछ, राइट. ये सारे के सारे, इसका सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पर है. प्रोग्राम फाइल्स यहाँ पर मिलेगा आपको. ये सब 7zip, Amazon, whatever information I have, whatever configuration I have, my browser, my password saved and everything. So if I copy this, इसमें सब कुछ कॉपी हो जाएगा. इवन यूजर्स, यहाँ पर मैं जिस यूजर से कर रहा हूँ ना, वो यूजर भी इसी में है. यूजर डेटा जो है वो भी आपका इसी में है, पूरा का पूरा. So if you create a new virtual machine, here it is, user data. So on my computer I have only one user. This is the user. ये सी मेरे यूजर का पूरा डेटा, टेम्परेरी फाइल, प्रोफाइल, and everything is there in your C drive. So if you do not copy C drive, and if you copy only this drive, you still will be able to recover the data which is there in this D drive. ये मेरी अलग डिस्क पे, ठीक है. C drive. Do not get confused between drives and disk, guys. दिखने में एक जैसा दिख रहा है. Let me open this again. This comes with the command disk management MSC in case you want to check this one. Okay, so my laptop has two disks. This is disk 0. Disk 0 has D drive, E drive, and F drive. D drive, E drive, and F drive. Okay, and disk 1, it has only C drive. So these are two different disks. I can back up this disk completely. मैं इस disk को copy कर सकता हूँ, backup और application कर सकता हूँ इसको छोड़कर. But what will happen if I back this up? ये मेरा data तो रह जाएगा, but I'll have to create a new machine. उसमें new user बनाना पड़ेगा, फिर से MS Office install करना पड़ेगा, ये सारे applications करने पड़ेंगे, Zoom install करना पड़ेगा, हर चीज मुझको login करना पड़ेगा, which is time consuming. तो वैसा backup और वैसा ये मेरे किसी काम का नहीं है, right? और मेरे मशीन में तो कोई IIS सर्वर वगैरह नहीं है. लेट्स से कोई सर्वर है जिसपे बहुत ही क्रूशियल कॉन्फ़िगरेशन होता है, जिसको बार बार छेड़ा नहीं जाता है, तो वो कॉन्फ़िगरेशन ही अपने आप में काफी ये चीज है. बाय द वे, दिस जी ड्राइव, दिस इज अ नेटवर्क ड्राइव, दिस इज अ क्लाउड ड्राइव. ये मेरे लोकल डिस्क पे नहीं है. अगर मेरा लैपटॉप वगैरह खराब भी हो जाता तो दिस ड्राइव आई विल हैव एक्सेस टू ऑन एनी अदर कंप्यूटर. इसका बैकअप वगैरह ठीक है. आई डोंट बैकअप दिस वन बिकॉज ये दिस इज अ गूगल ड्राइव, राइट. ओके, सो इफ आई हैव अ कॉपी ऑफ दिस, एग्जैक्ट रेप्लिका इस मशीन का बन जाएगा, जहां पर जितने कॉन्फ़िगरेशन थे सब कुछ मिलेंगे. एंड बिकॉज आई एम कॉपिंग द सी ड्राइव, if I start creating a machine from scratch, I will have to go and check कि भाई OS कौन सा था, OS में वर्जन कौन सा था, अपडेट्स कौन कौन सी ले रखी थी हमने उसमें. लेट्स से कि उसमें एक पर्टिकुलर वेरिएंट या वर्जन है, वही मेरे पे मेरी एप्लीकेशन के लिए सूटेबल है. सो वो कौन सा था, PowerShell का वर्जन कौन सा था. I mean, there are n number of things which I'll have to remember, which is not possible. And especially if my machine is down, and that time I'm trying to use my replica, or I'm trying to use my backup, and my backup doesn't have my OS drive. तो इतना ज्यादा वो
कियोस हो जाएगा कि डेटा है आपके पास, बट उस डेटा को यूजेबल बनाने में ही आप 5 से 6 घंटे ये कर दोगे कि इसका आईपी कौन सा था। नाउ लुकिंग एट वन मशीन, इट्स वेरी सिमिलर, बहुत सिंपल है कि यार इसका आईपी याद रखना बहुत सिंपल। जस्ट इमेजिन व्हेन यू आर डीलिंग विद थाउजेंड्स ऑफ सर्वर, 20,000 50,000 सर्वर पे आप जब डील करते हो, दैट टाइम यू रियलाइज कि एक सर्वर का आईपी भी अगर आप मिस कर देते हो ना, सो इट्स अ ब्लंडर, इट्स अ बिग डील, बिकॉज अनलेस यू गेट दैट आईपी, आप लोग उसको ये नहीं कर पाओगे, नेटवर्क में नहीं ले पाओगे, आपके नेटवर्क में नहीं आएगा, ग्रुप पॉलिसीज अप्लाई नहीं होगी, यू विल नॉट बी एबल टू लॉग इन। बहुत सारी चीजें उससे अटैच होती है, और उस सेम रेंज का कोई और आईपी आप दे नहीं सकते हो, मे बी सम अदर कंप्यूटर इज यूजिंग दैट आईपी, सो देयर आर n number of things which are attached to that, right? Hence copying or backing up the C drive is must. So when I say I'm backing up a virtual machine, what is exactly being backed up? ये जो एक डिस्क है ना, बस डिस्क ही बैकअप हो रहा है, इसके अलावा कुछ भी ये नहीं होता है। So when you say see a backup, वहां पे आपको एक डिस्क ही दिखने वाला है। And when I create a machine, जब मैं फेल ओवर करता हूँ या बैकअप से एक मशीन बनाने की ट्राई करता हूँ, so nothing happens. What happens at the background, जैसे आप Azure पे एक मशीन क्रिएट करने का कमांड ये करते हो ना, one machine starts creating, deployment इसका शुरू हो जाता है, and then because you have given the command, तो वो what it does, ये इसका आपने बैकअप ले रखा है सपोज, ठीक है, इसका ये जो हमारे सी ड्राइव का बैकअप है, या डिस्क 1 या सी ड्राइव, whatever you call it, इसका बैकअप है। So while creating this machine, if I'm creating it from scratch, it will take an empty disk, उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करेगा, वो सब करेगा, न्यू यूजर बनाने बताएगा आप लोगों को, वो सब करना पड़ेगा। But if I'm backing up with a C drive, then you get an option जहां पे आप, मतलब ऑप्शन भी नहीं, you just deploy the machine and background में ही जो है, when it comes to taking a disk, वो इस डिस्क से अपने आप को अटैच कर लेता है, और to use correct word, this disk get attached to that VM. ये VM जो है इस डिस्क को अपने आप से अटैच कर लेता है। So you will have exact replica of this drive. Obviously वो गैप रहेगा जो नंबर ऑफ आवर्स का है, if you backed it up last night 10:30, तो तब से लेके अब तक का डेटा नहीं हो रहा है इसमें, ठीक है। इसका भी सेम ही कॉन्सेप्ट है, डेटा वगैरह अगर 10:30 को लिया तो उसके बाद नहीं होगा, बट दिस कैन सिंपली बी अटैच टू एनी वर्चुअल मशीन, इसमें कोई यूजर वगैरह बहुत कुछ नहीं है, बट डेटा कोर इसी में होता है। सो ये भी ऐसा नहीं कि यू आर टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड। इज इट क्लियर गाइस व्हेन आई से बैकिंग अप अ वर्चुअल मशीन? लिटरली ये सब बैकअप नहीं होता है, ये बैकअप हो रहा है, इसमें सारी मेटा डेटा इंफॉर्मेशन सब कुछ है। इज इट करेक्ट? इज इट क्लियर टू यू? एक क्वेश्चन था सुहेल, यस अमित। इसमें सिर्फ फुल बैकअप ही होता है ना, कोई और टाइप का बैकअप नहीं होता ना? नहीं नहीं, क्यों फुल बैकअप होगा? डिडंट यू प्रैक्टिस? डिडंट वी सी व्हाइल बैकिंग अप वी डू गेट एन ऑप्शन, स्टेट बैकअप चाहिए, सिस्टम स्टेट बैकअप चाहिए, बेयर मेटल बैकअप चाहिए। हमने तो एक पीडीएफ का बैकअप किया था। Oh, so you were not there, I guess. Shrishti, you were there in that session, right? हमने सिर्फ एक पीडीएफ का भी बैकअप किया था। So it is up to you. You can Yeah. have incremental backup. You can have Okay. C drive में भी if you want. C drive में एक और जगह होती है. Let me show it to you now. C drive में जो है ऐसा नहीं कि C drive में सभी हर चीज काम की होती है, ठीक है। C drive में now there is this download वाला फोल्डर जहाँ पे temporary files डाउनलोड होती है। Then if I open this location, temp वाला, I just open run and type %sign and temp. So this gets open. These are all temporary files. Just guys, give me a minute. Someone is at my door. Just a minute. Where is it exactly? If I want to see the location, here it is. C drive, users, my user, app data, every user will have it. App data, local and temp, which is not at all useful. ये सिर्फ कैशे जमा कर रखता है। I can delete it anytime, और ये भी इतना ज्यादा डेटा होता है कई बार, I mean I keep deleting it, इसलिए दिखा नहीं। You try it in your machine, आपको GBs में डेटा दिखेगा। So इतना अगर जंक डेटा है, so why should I back up this data? So while backing up, you do get an option to exclusion also, कि मुझको पूरा का पूरा C drive बैकअप चाहिए, but उस C drive में से ये लोकेशन exclude होनी चाहिए। We did see this.
If you do not remember, please watch the video Are once. we talking about on-prem? नहीं, it's not only Okay, on cloud. prem, Azure पे भी है ये ऑप्शन। Azure पे भी ऑप्शन मिलेगा आपको। You'll have to do it with the help of agent, but do you remember I downloaded that agent? Mass agent. Right, and there you get all these options, so you can do that. But don't worry, हम बैकअप नहीं, इतना डिटेल में हमको बैकअप नहीं पढ़ना, ये स्टोरेज वालों का काम है, ठीक है। But good, if you have any questions, please do ask. Why I keep saying this कि ये इतना important नहीं है, इसको इतना मत पढ़ो, because बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए आपके माइंड में भी पढ़ने के लिए। You will not be able to cope up, इतना वो पढ़ते ही रह जाओगे आप जब तक ऑनलाइन इंटरव्यूज खत्म हो जाएंगे, जो एक हाइप चल रहा है वो बंद हो जाएगा, राइट? दैट शुड नॉट हैपन। तो ऐसे नहीं कि हर अननेसेसरी चीज को भी आप पढ़ते रहो। Hence, I'm just giving you important things. Make sure you focus on them. You spend your time and energy on that. Okay, so only a disk gets backed up. Literally, operating system का कुछ नहीं होता है बैकअप होने के लिए. Is it clear? Till here, anyone has any question? Srishti, Juhi? So the backup which we schedule for every day, वो full backup ही होगा ना, या फिर Depends how you have scheduled. While Okay. creating the policy, आपने एक ही बार सब कर रखा है, एक ही बार आपने सारा डिसाइड कर रखा है. You have created a policy, उस पॉलिसी में आपने सब बना रखा है कि इस टाइम पे होना चाहिए, ये होना चाहिए, बैकअप होना चाहिए, एंड एवरीडे वो सेम चीज को फिर रिपीट करता रहेगा. You're not changing it every day. Right? आप पॉलिसी एक बार बना रहे हो, उस पॉलिसी के हिसाब से वो ये करता रहेगा. You want to change something, you go and change, make changes in that policy. सारे वर्चुअल मशीन्स पे अपने आप अप्लाई हो जाएगा. Okay. अगर आपने रखा है उस पॉलिसी में कि सब ये दोनों बैकअप होने चाहिए, दोनों हो गए, आपने रखा है सिर्फ सी ड्राइव होना चाहिए, सी में XYZ होना चाहिए, एक्सक्लूजन ये चाहिए, वो वैसा होगा. Whatever you have decided in your policy. Like we had differential backup, incremental backup. वैसा. डिफरेंशियल बैकअप, इंक्रीमेंटल बैकअप, उस वाले में हम दिस इज a sort of incremental backup I could say. Because लेकिन उस when वाले you are इसमें, हाँ, उस वाले इसमें आपको because नहीं when you जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल भी. नो वन इज गोइंग टू आस्क यू. वो टिपिकल स्टोरेज वाला क्वेश्चन है. होता क्या इंक्रीमेंटल बैकअप, आई मीन वो है इस डॉक्यूमेंट में भी है, यू कैन रीड इट. इंक्रीमेंटल बैकअप, फुल बैकअप और डिफरेंशियल बैकअप, दीज आर द 3 टाइप्स वी हैव. फुल बैकअप क्या होता है? कोई भी मशीन जो मैं फर्स्ट टाइम बैकअप कर रहा हूँ, इट्स ऑब्वियसली फुल बैकअप, ठीक है. ये मशीन कभी बैकअप हुई नहीं थी, फर्स्ट टाइम मैंने इसको किया, ये हुआ मेरा फुल बैकअप. इसमें 151 फाइल्स थे, फुल बैकअप. नाउ नेक्स्ट डे व्हेन आई एम बैकिंग अप, नेक्स्ट डे जब मैं बैकअप करने आ रहा हूँ, इसमें से 150 मशीन्स, 150 फाइल्स में कोई चेंजेस हुए नहीं है, एक फाइल में चेंज हुआ है. तो उस 150 फाइल को मेरा सिस्टम फिर से बैकअप नहीं करेगा. मतलब वो इसी को बस यहाँ से पिक कर लेगा और एक फाइल को रीरन करेगा. अल्टीमेटली यू विल हैव 151 फाइल्स, लेकिन इनके जो है ये 150 के ओल्डर वर्जन हो गए, बिकॉज देयर आर नो चेंजेस, और ये एक में जो चेंज हुआ है इसका न्यूअर वर्जन होगा. दिस इज योर इंक्रीमेंटल बैकअप. एक होता है डिफरेंशियल बैकअप. वो डिफरेंशियल को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में देन आपको बाइनरीज में जाना पड़ेगा कि वो फाइल में जो छोटे मोटे चेंजेस होते हैं उस फाइल को भी ये करता है. बट यू डू नॉट नीड टू गो टू दिस लेवल, ये बैकअप टीम का काम है, राइट? आपको जो दिया जाएगा, जो अज्योर पे ऑप्शन है, यू स्टिक टू देम. कि अज्योर पे ये ऑप्शन है. बैकएंड में अज्योर क्या यूज कर रहा है? बाय द वे इट यूजेस इंक्रीमेंटल बैकअप, बट यू डोंट नीड टू स्पेंड योर टाइम ऑन दैट. Initially it uses full backup, later it uses incremental backup. Clear? Okay. So इसमें time difference आता होगा ना, means किसमें? first backup time लेता होगा, next backup में जल्दी बैकअप खत्म लेने में, हाँ, because ऑब्वियसली होगा. फर्स्ट बैकअप हमेशा टाइम लेगा. क्यों? क्योंकि पूरा 150 GB फर्स्ट टाइम वो बैकअप कर रहा है. नेक्स्ट टाइम उसने 150 GB का डेटा जो है पिछले बैकअप से ही उठा के यहाँ रख लिया, और 1 GB जो है इस नेटवर्क से लेकर आया. okay. दिस इज Yeah, डे वही 1. question. लेट्स से कि डेली पॉलिसी है आपकी अगर, तो दिस इज डे 1. फुल बैकअप होगा, ऑब्वियसली फुल बैकअप होगा क्योंकि डे 1 है, पूरा बैकअप हो गया. अब ये जो डे 2 है उसके बाद मैंने मशीन पे कोई काम ही नहीं किया, तो 150 तो यहीं से कॉपी कर लेगा इमीडिएटली, और 1 GB को जो है वो यहाँ से पूरा सिंक करेगा फिर से, बिकॉज दे फाउंड के सम चेंजेस वर देयर. ठीक है. सो वी आर टॉकिंग अबाउट द बैकिंग अप ऑफ द फाइल.
सिर्फ इसमें ड्राइव जो है वो बैकअप होता है, लिटरली ये मशीन कुछ होता ही नहीं है वैसे भी। व्हाट इज एन ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक वर्चुअल मशीन है क्या? व्हाट इज अ वर्चुअल मशीन? अगर इस सी ड्राइव को निकाल दो, कोई वर्चुअल मशीन बना बचेगा क्या? ऑन दिस Azure portal, if I have a machine here, this machine, and I'm saying you delete all the disk, जितने भी disk affiliated है ना इस मशीन पे, delete all of them. वहां पर लेट्स से 10-12 डिस्क थे, डेटा डिस्क, यू डिलीटेड एवरीथिंग एंड नाउ यू आर सेइंग, एंड आई सेड कि वर्चुअल मशीन रहने तो बाकी सारे डिलीटेड डिस्क जो है सारे डिलीट कर दो। यू केम हियर, यहाँ पर जितने भी डेटा डिस्क थे यू डिलीटेड, एंड नाउ यू आर आस्किंग शुड आई डिलीट दिस डिस्क आल्सो? इज इट पॉसिबल? इफ यू डिलीट दिस डिस्क देन व्हाट इज द वर्चुअल मशीन? अगर ये डिस्क नहीं है तो वर्चुअल मशीन क्या है देन? कैन यू डिलीट दिस डिस्क? I want my virtual machine to be there and I want this disk to be deleted. Is it possible? No. No, because नो भाई. this is your virtual machine. ये OS disk जो है ना, इसीलिए इसको इतना बड़ा segregate किया है, OS disk और data disk. Data disk में you can have plenty of disk, 10, 12, 50, मतलब उसका भी एक लिमिट होता है. You have 26 letters, तो 26 letters तक कर सकते हो. उसके आगे there is a different method, but yes you can have more than 26 से भी. जैसे ये जो है ना ABCD वगैरह, हर डिस्क लगाते हो तो उसको एक लेटर भी देना पड़ता है. But you can have more than that also. There is a method उसके बाद भी, हमको वो यहाँ पर नहीं डिस्कस करना है, ठीक है. बट ओएस डिस्क को अगर आप देखोगे एक अलग से सेक्शन दिया है, क्यों? बिकॉज दिस डिस्क कैन बी रिमूव्ड, कैन बी रीअटैच्ड, किसी और इसको लग सकता है, कुछ भी हो सकता है. दिस डिस्क you cannot delete. These disks can be deleted. Now you can say there are 0 data disk. This disk can be स्वैप, मतलब अगर मेरे पास 2020 का एक ये है, 2022 का एक ऑपरेटिंग सिस्टम का डिस्क है, एंड आई वांट कि इसी वर्चुअल मशीन पे, मेरे इसी वर्चुअल मशीन पे टी सॉफ्ट पे ओएस डिस्क जो है इसका, ये हटके वो वाला हो जाए. दैट आई कैन डू, बट आई कैन नॉट रिमूव दिस डिस्क. और द मोमेंट आई स्वाइप दिस डिस्क विद द न्यू वन, तो वैसे भी ये मेरा वो वर्चुअल मशीन बचा ही नहीं. जिस डिस्क का मैंने डिस्क यहाँ पर लाके लगाया, जिस वर्चुअल मशीन का डिस्क मैंने यहाँ पर लगाया है लाकर, यूजर आईडी वगैरह सब कुछ उसका चलने लग जाएगा. बिकॉज दिस इज योर वर्चुअल मशीन. वर्चुअल मशीन इसके अलावा कुछ है ही नहीं. सो टेक्निकली दिस इज योर वर्चुअल मशीन. ये जो डिस्क दिख रहा है ना, दिस इज योर वर्चुअल मशीन. इसके अलावा वर्चुअल मशीन कुछ नहीं है आपका. सो इज दिस क्लियर? Yes. सो व्हेनेवर आई से कि बैकअप से आप मशीन भी बना सकते हो, सो आई ऑलवेज मेंट कि उस बैकअप में सी ड्राइव होना चाहिए. सी ड्राइव नहीं है तो देन कोई मशीन नहीं बन सकती, कुछ नहीं हो सकता. सो दिस इज अबाउट बैकअप. टॉकिंग अबाउट रेप्लिकेशन, मैं रेप्लिकेशन की बात कर रहा था, उसमें भी यही समझा रहा था कि मशीन रेप्लिकेट होता है, दैट मीन्स कि उसका सी ड्राइव में रेप्लिकेट होता है. एंड ऑफ कोर्स अगर डी और ई ड्राइव आपने ये कर रखा तो वो भी. मशीन रेप्लिकेट होता है मतलब उसका डिस्क रेप्लिकेट होता है, राइट? डिड यू गेट इट? सो आई कैन शो यू द डायग्राम, नेक्स्ट डायग्राम, सो यू विल अंडरस्टैंड इट वेल. Backup, recovery, migration, these are very important topics, and load balancer. तो अभी इसके बाद जितने भी बैकअप के बाद जितने भी शुरू हुए हैं ना, काफी क्रूशियल टॉपिक्स है. इस पे बहुत ज्यादा फोकस करो. इंटरव्यू में 60% यहीं से आने वाला है सब कुछ, माइग्रेशन से, बैकअप से, लोड बैलेंसर से. यू कैन आस्क कुमेल, यू कैन आस्क इरफान. मेजॉरिटी क्वेश्चंस और डिसाइसिव क्वेश्चंस यहाँ पर है. इनिशियल जो है वो सब वार्म अप क्वेश्चंस होते हैं. उसमें आपने थोड़ा बहुत सही दे दिया, थोड़ा बहुत गलत दे दिया, थोड़ा फिलोसफी झाड़ दिया, थोड़ा बहुत ये दे दिया, दैट इज फाइन, ठीक है. यहाँ पर आपके टेक्निकल क्वेश्चंस एंड वेटेज वाले क्वेश्चंस यहीं पर होंगे, कोर टेक्निकल. इनिशियल क्वेश्चंस जो है इसके पहले, वो तो कोई एचआर पर्सन भी पूछ लेगा आपसे, कोई 11 का बंदा भी पूछ लेगा. व्हेन इट कम्स टू टेक्नो मैनेजर या कोई आर्किटेक्ट आपका इंटरव्यू ले रहा है, कुछ ये है, सो यू विल बी एंड अप विद दीस क्वेश्चंस. Again you will say you are from the implementation team, but you should know this कि ये सब होता क्या है. Okay, so this is the replication. replication कहाँ से हो रहा है मेरा? यहाँ से यहाँ पर replication हो रहा है, ठीक है. यहाँ से यहाँ as in, वो मैं बता देता हूँ कहाँ पर दिखेगा आपको सारा डिटेल्स. नेटवर्क में दिखता है by the way. We'll come to this कि यहाँ पे this is the result. How do we configure this? We'll come to that. ये सब हम देखेंगे अभी.
So the one which I was explaining here on the Paint, MS Paint, I'll show it to you here. Now this is my machine, tsoft-vm001. The machine is in East US. So it is very obvious that my disaster recovery service vault has to be in some other region other than East US. So it is in West US. So my Azure Site Recovery Vault, it is in West US. Is it clear, guys? Till here? Itna diagram samajh mein aaya? This is my machine. It is in East US. I have configured the replication on this machine. For that, I needed one Azure Site Recovery. So my Site Recovery Vault has to be in some other region other than East US. So in this case, my Azure Site Recovery Vault is in West US. Is it clear till here? Yes. Now this is not getting replicated directly. What is happening here is machine का एक जो है कैशे इमेज बनता है यहाँ पर स्टोरेज अकाउंट बनता है और इस मशीन का कैशे इमेज बनता है. नाउ अगेन आई एम सेइंग अ वर्चुअल मशीन मतलब किस चीज का इमेज बन रहा है यहाँ पर? हु कुड टेल मी? OS disk. OS डिस्क. सी ड्राइव जो है OS डिस्क उसका इमेज बन रहा है. मतलब यहाँ पे जो सी ड्राइव था उसका एक कैशे इमेज यहाँ पर बन रहा है, टेम्परेरी इमेज, और यहाँ से ये जो है रेप्लिकेट हो रहा है मेरे साइट रिकवरी में, विच इज इन अनदर रीजन. डायरेक्टली यहाँ से उस रीजन में डेटा नहीं जा रहा है. बहुत सारे रीजन है उसके पीछे. कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहिए, कोई एक्चुअल रनिंग मशीन में कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, परफॉर्मेंस इश्यू नहीं चाहिए, नेटवर्क बैंडविड्थ जो है ये खाएगा डायरेक्ट मशीन से. इसलिए व्हाट नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग गाइस, कंसिडर एज योर लिफ्ट. मतलब आपको आपके फ्लैट से बहुत सारा फर्नीचर निकाल कर 8th फ्लोर पे ले जाना है या 8th फ्लोर से नीचे लेकर आना है. यू गेट इट वन बाय वन. एक फ्रिज लेकर आओ, आप एक वॉशिंग मशीन लेकर आओ, आप एक बेड लेकर आओ, एक सोफा लेकर आओ. उसमें एनर्जी, टाइम, बैंडविड्थ, ह्यूमन रिसोर्स, आपका स्टेयर्स यूज करना या लिफ्ट यूज करना, उसकी इलेक्ट्रिसिटी कितना ये होगा. एंड इमेजिन दिस इज वन ऑफ योर कंटेनर. आई अंडरस्टैंड इतना बड़ा कंटेनर नहीं होगा कि कोई सारी चीजें आ जाए, बट जस्ट इमेजिन. और लेट्स स्मॉल हाउस होल्ड चीज, ये सारी की सारी आप चीजें एक कंटेनर में रखते हो और एट अ टाइम इसको वहां से यहाँ ले जाते हो, विच इज द इजिएस्ट टास्क. Obviously this one. So the same logic they are applying कि data, they do not want to travel the data from here to here because this is running machine. They do not want कि running machine पे ज्यादा हो. Ultimately data यहाँ से भी जा ही रहा है, but this is a running machine. They do not want the machine to get hampered. So यहाँ से immediately site वाले storage account में ही कर लिया, which is easy task. Same network में है, same IP range, सब कुछ same होगा. It gets easy to copy. This is a cache storage folder, temporary. और यहाँ से site recovery में जाता है. So this is how your replication works. Is it clear, guys? Anyone has any doubt? Let me know. So in this scenario, if we say that ECUS is down, the storage account will still be active, right? Which storage account? Your cache storage account? Yes, right. It doesn't matter. No, first thing that won't be Okay. active, and you are not even touching that storage account. You don't Okay. even get to access that. That is there as a placebo, not literally placebo. That is being worked, but not for you. It's for Azure, for the background. This is just for your explanation. When you have to recover something or you have to replicate, you will go to your Azure Site Recovery, not to the storage one. Storage is not accessible for you. That is only for machine users, you can say. क्योंकि ईस्ट यूएस में ही रखा है ना, हाँ. वही Fine, थोड़ा let it डाउट. be. Down, हाँ, वो डाउन होने जाने, वो हो जाने दो. हम देखेंगे ना इसमें टाइम कितना होता है ना. इसमें डेटा लॉस कितना टाइम हो रहा है वो हम देखेंगे. We'll see it now. कि इसमें से और इसमें डेटा लॉस कितना हो रहा है यहाँ से यहाँ पर जाने में, ओवरऑल प्रोसेस में बहुत मिनिमम डेटा लॉस होता है. So is it clear till here? सोहेल, मशीन का जो कैशे में ट्रांसफर होता है तो वो जितने भी है इस के थ्रू होने जा रहे हैं, तो वो आपने कहा इज इट लाइक आफ्टर एप्लीकेशन वो स्टिल उसी रहता है, फिर वो इज लाइक जो किया था वैसा कुछ है, हमको पता भी बैकअप नहीं है. जैसा? नहीं, हमको पता भी नहीं है और we don't even care about it. We are getting our अच्छा, services from okay. here. We are going to restore our machines from here. We are going to
failover from here. This is not for our use. ये सब मैंने आपको diagram समझाया है. And you won't even create this. ये अपने आप ही create होगा. You don't do that. ये create भी अपने आप होगा, वो empty भी अपने आप होगा, उसका size भी अपने आप select होगा. You don't have to do that. You configure this. At the background, this gets configured. Now, when you log into your computer, जैसे ही आपको जो login वाला पेज दिखता है ना, पावर बटन दबाने से लॉगिन वाले पेज पे आने तक, दैट इज अ क्वेश्चन इन विंडोज, व्हाट इज द बूटिंग सीक्वेंस. ठीक है, विंडोज का इंटरव्यू कभी दिया आप लोगों ने, तो बूटिंग सीक्वेंस क्या होता है, उसके बीच में देयर आर 14 प्रोसेसेस जो होते हैं, विन लॉगिन वगैरह वाले सर्विसेज रन होती है, एंड देन यू गेट द लॉगिन स्क्रीन. बट डू यू केयर अबाउट इट? ऑल यू केयर अबाउट लॉगिन स्क्रीन. लॉगिन आना चाहिए, पासवर्ड आना चाहिए, मुझको पासवर्ड पता होना चाहिए, यू शुड बी एबल टू लॉग इन. सिमिलरली, यू डोंट केयर अबाउट दिस, यू डोंट नो दिस, यू डोंट क्रिएट दिस. You will be working on this, but this is for your information कि background में ऐसे होता है, directly data यहाँ से यहाँ नहीं आ रहा है. Clear? Yes guys, anyone has any questions? Do you want to continue with another session or should we do it tomorrow? We will go on the portal and configure the disaster recovery. We It's can like, continue. okay, fine. So any questions still here? If not, I'll just clear this and we'll go to the portal and we'll start deployment. Okay. So either you can create a recovery vault first and then start replication, or you can simply go to your virtual machine. Now we are talking about the methods which we have to start the replication. You can go to your virtual machine. Sorry, someone saying something? Yeah, so I just had one doubt. Actually, at my level, I know it's not for others. Just to know that Azure Site Recovery and Migration are almost as similar, right? Because they Yes. almost perform the same task. Yeah, right? they both of them use Azure Site Recovery, ASR, Azure Site Correct. Recovery. Okay. Even in migration, the concept is same. Same only. Okay. इसीलिए हम पहले इसको कर रहे हैं, then we'll do the migration. तब आपको समझ में आएगा कि ultimately ASR ही जो है हर चीज का replication. Migration में भी क्या होता है, आपके running machine का वो replica बना के रखता है और उसको deploy Azure पे कर देता है. That is your migration. उससे ज्यादा है ही क्या? Correct. फिजिकल मशीन रन कर रही है, मेरा लैपटॉप है, मैंने माइग्रेशन शुरू कर दिया, पूरा का पूरा रेप्लिकेशन उस पर बना के रखेगा और उसी को वहीं पर वो ये कर डिप्लॉय कर देगा, एक मशीन हो गया माइग्रेशन. सो उसके बैकएंड में ASR ही यूज होता है, Azure Site Recovery Service, और इसके भी बैकएंड में Azure Site Recovery Service ही यूज हो रहा है. Correct. Okay. Okay, so you can go to virtual machine and here under backup you have disaster recovery. Backup we have already seen, so we are not discussing anything in backup. You can select. Okay guys, there's only 1 minute left. I'll disconnect this session. I will take a break of 5 minutes. I have some work. 5:20 we'll join using the same link. Okay.